This is our second session of learning the diagnostic and homeopathic approach in the psychiatric disorder. Our title is the diagnostic and homeopathic approach in the psychiatric disorder. Instead of directly entered into the psychiatric cases, I want to teach you, or I want to discuss the case taking in the homeopathic practice. Because the case taking in homeopathic practice has a vast advantage. Why this? So I talking vast advantage. Why this? Because the homeopathic case taking, if do properly in a systematic way, it is the way to unfold the conflict. It is the way to understand the conflict. It is the way to, it is nothing but the psychoanalysis of the person. By doing the case taking in a detail to understand the person in a social aspect, in the family environment, their emotions, their will, their intellect, their conscience, all this indicates that we are fully understanding the person. So that means we are doing the psychoanalysis, and the psychiatrist and even the psychologist doing the same. They are trying to find out the conflict, what is the problem, how the problem started. But the same thing is nowadays you don't get in the psychiatric practice. Who are the allopathic psychiatrists? They are more interested in the diagnosis and the prescription. But if you see the textbook of psychiatry by Kaplan, it is the lot of thing has mentioned regarding the importance of case taking. Because unless and until you understand the patient socially, psychologically, you can't manage it properly. Just giving the medicine is not sufficient as far as the allopathy is concerned. Ki antidepressive de do, antipsychotic de do, is not suffice, because understanding the problem will helps to resolve it properly through the better advice, right? Through the some advice, through change in the lifestyle, to change in the thought process, like that. So why we are our case taking and our homeopathy, as we are dealing with the predictive homeopathy, predictive case taking, we are trying to find out the genetic constitutional remedy and the importance of that, and how we derive the genetic constitutional remedy, that I was already explained. It is not the something very different terminology. The genetic constitutional simillimum is the similar to the constitutional remedy. But what things we need to understand while deriving the genetic constitutional simillimum, that is very important. That is very important. Right? When we understand the genetic expression of the person, then we can able to derive the genetic simillimum, and this we can assess through the skillful history taking, where there is a specific pattern of questioning and getting the information, right? Mostly the case taking concern of the in finding out the genetic constitutional remedy is the way how to assess the or understand or evaluate the mental makeup of the person, physical makeup, general makeup, and the disease makeup, that is called as the defense mechanism. We have already done the mental makeup, that is the how the person is extroverted, introverted, how is the will, intellect, their example, their rubrics, and probable remedy. The most important in the whole mental or psychology or the mind
the most important thing is the will, desire to live. So why this is important? This we categorize according to the miasmatically. If the person having the no desire to live, loathing of life, aversion to life, or suicidal thought or tendency or suicidal attempt, this is the most important, because it is more important than the emotion like anger, the emotion like anxiety, the emotion like even the anguish. So we have to understand the sequentially hierarchy, that the symptom which is related to will is most important. Then the later on the symptoms related to intellect is more important. Then uske niche the symptom related to morals are important. Then sensitivity, and then last comes the emotion, the emotional reaction. Most of the time we take lot of emotional reaction or emotional symptoms in the totality. That's why we don't get the desirable result. So if you know the importance of each and every terminology or mental state or attributes or traits, dispositional traits, then we can able to understand or derive the proper totality. Right? Now we are going towards the understanding the physical makeup. Understanding the physical makeup. What is the meaning of physical makeup? Is nothing but what you are seeing in front of you. When the patient comes to you, how is or her facial contour, chin, forehead, his or her build up, the color, the hairstyle, the type of hair. That is why we can call it as the phenotypic expression of the gene. There are the two types of the genetic expression, we can say. Someone is unmute. Please mute yourself. Some voice is coming. So there are the two type of prescription. One is the genotypic and second is the phenotypic. Genotypic means internal. It is a both are the genetic expression, but it is the disposition, but that we can call it as a subjective. जैसे हम सिम्टम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. तो सब्जेक्टिव मतलब इंटरनल, तो वैसे ही जीनोटाइपिक मतलब डिस्पोजिशनल फीचर, सेंसिटिविटी एंड ऑल दैट. बट द phenotypic is nothing but the observable feature. The observable feature. It is also we can relate to the physiognomy, because the physiognomy is a very important part in the homeopathy. What is the physiognomy? Might be for some practitioner this term is the new, but to become a good homeopath we need to understand the physiognomy, the importance of physiognomy in practice, in case taking, and in the prescription. Why? What is the physiognomy? It is the art of judging the external feature of the person, which reflect the mind or the inner mental state, which reflect the mind or the inner reflect state. There's a facial expression, right? Contour of the face. How is the face look? Whether it is a oval shape, pear shape, rounded, whether it is a squarish face. How is the chin? Whether it is a pointed chin, round chin. How is the nose? All these come because when we interpret this, because these are the inner genetic expression, none of the person can change this, because right, none of the person or patient can change this, because when the point comes of subjectivity, when you ask the nature, when you try to evaluate the patient nature, it could be patient may lie sly, patient may manipulate his or her nature, patient may show his false picture, but the physiognomy never lie. This is the hard data that will always helps you to differentiate the remedy or to rule out the remedy.
to differentiate the remedy, to rule out the remedy. Because when you see, for example, just if the patient teeth are forwarding, जैसे बोलते हैं दांत बाहर है, बड़े हैं और बाहर है, and the patient showing you that he is very dictatorial, aggressive, and all this, but the body language, the way of sitting, and the teeth protruding forward denotes the timid nature. The way the timid person sitting and the way that the aggressive or the dominating person sitting is the different. So we can interpret from that angle. If your remedy is coming that like Morpsol, Causticum, Medorrhinum, Noxomica, Platina, and this is the, you get the physiognomy which indicates that the personality going towards the timidity, anxious, all these, then you have to evaluate the data again. Because most important, keep in mind the way the patient answering or narrating is more important than they actually speaking or actually telling whatever they are telling. The way means किस तरह से, किस भाव से, किस बॉडी लैंग्वेज से, किस स्पेशल एक्सप्रेशन से वो बता रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो क्या बता रहा है. Content of the thought or content of the speech is not that much important than actual the way, the expression that we have to pick up, right? For example, now I have just seen the patient who is the 2 years baby child who is suffering since the 1 week to 10 days from fever, coryza, cough, shown twice to thrice to a pediatrician, give nebulization, constantly giving the nebulization. But the patient's mother's history is constantly nagging, shrieking, constantly irritable, become irritable. But on observation, I don't feel like that. But might be she becomes in that state in a fever, but the mental state now in front of you is again the important. When I examine her, she properly cooperate me. They enjoy, they smile. So when you derive the remedy which having the irritability, shrieking, touch aversion to, look at aversion to, you must be a quite differentiate whether whatever the mother's is intensely saying or this is the troublesome for the mother and the actual state of the patient. So similarly in the chronic cases also, sometimes the patient becomes manipulative and the businessman, the professional, they don't want to show their weakness. In that cases, this physiognomy and physical makeup is very important, right? Are you understood what is the physiognomy? It is the science of the effect of internal from external. You get the effect of internal from external. You get the features externally which reflect the internal body, internal mind, right? We can, if you are interested, we will take the special session on the physiognomy because it is very interesting chapter or interesting thing to understand in our practice, not the other science or not in the allopathy, I do, right? But in our homeopathy, this observational features or physiognomy is very, very important. Now the physical makeup, I already explained, it is the phenotypic characteristic of the every individual whose bases are protein that are derived from the genetic code. That means even if it is the physical makeup कि वो उसके बाल कैसे है, facial contour कैसे है, मतलब facial shape कैसा है, it is nothing but the genetic basis. But the correct interpretation is very important.
This is very useful tool towards the scientific and genetic similibum to derive the genetic similibum. Right? Because these are the direct representation of the gene if you interpret it correctly. But most of the time, because we never taught this in our school life or college life, in our BHMS or college life, this is the extra knowledge that we have to take from the book or from our experience. That's why the most of the practitioner don't have the habit to observe or to understand the physical makeup or the physiognomy, right? So we must be start to observe the patient, to observe what he or she is doing when enters into the chamber, how he or she is sitting, right? And the other things that we already explained, and in the later slide I will explain, right? नाउ इन द फिजिकल मेकअप में हमको क्या क्या देखना है? आई हैव ऑलरेडी सेड कि हेयर्स देखना है ना, फिजिकल फेशियल कंटूर देखना है, बिल्ड, स्टेचर, पोस्चर, राइट? ऑल दीज आर इंक्लूड इन द फिजिकल मेकअप. अभी हेयर से हमको कैसे समझेगा कि ये पर्सनैलिटी कैसे है, राइट? बिकॉज एवरी ईच सेल रिप्रेजेंट द होल. जो माइजम का जो लेक्चर लिया था, दैट वाज वेरी वंडरफुली इट इज एक्सप्लेन इन दैट सेशन और लेक्चर दैट द वन सेल रिप्रेजेंट द होल इंडिविजुअल. One cell, the genes is the representation, is the blueprint of the whole person. That genetic code or that material decide कि ये person कैसे होने वाला है, कि ये person की height कैसे होने वाला है, color कैसे होने वाला है, hairs कैसे रहेंगे, इवन द डिसीज क्या एक्सप्रेस होंगे, सोरिक रहेंगे, साइकोटिक रहेंगे या सिफिलिटिक रहेंगे. दैट ऑल रिप्रेजेंट थ्रू द जीन्स, all represent through the genes. That's why the genetic जो इंफॉर्मेशन है या जेनेटिक एक्सप्रेशन है उसको हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, so that we will get the genetic constitutional remedy. Now the people who have the thin, smooth and well placed hair, try to understand. If you want to note down, the people who having the thin and well placed hair, thin and smooth, not rough, not thick, the thin and smooth and well placed hair denote the fastidious nature, that this person is very balanced, systematic and fastidious, which indicates towards the remedy like arsenic. It is not only arsenic. डोंट बी फिक्स टू वन रेमेडी कि आपने ऐसे देखा कि थीन बाल है, अच्छे से बाल किए हुए है, तो चलो आर्सेनिक दे दो. दिस इज समथिंग लाइक अ प्रेजुडिक्शन. We have to evaluate the totality. We don't get biased and give the remedy on one single symptoms or observation unless and until it is a highly remarkable, right? So if it is the thin, it denotes the fastidious nature of the person. But in contrast, if the hair is thick, in contrast, if the hair is thick and raised, मतलब खड़े हुए बाल और thick है, तो this indicates the defiant nature of that person. Defiant मतलब लड़ने के लिए तैयार. If something going against, then he or she will fight. It is not fight, useless fighting, but he quarrel or he fight, he take part into the argument if the things are going happen haywire. So this defiant nature you can see in the mercury, you can see in the opium. So all the defiant remedies, right? Now another type of hair is the thick. Thick भी है, tough भी है, and stuck to the scalp. मतलब कुछ के बाल ऐसे ऊपर आते, कोई स्टिक टू द स्काल्प, स्काल्प में चिपके हुए हैं, स्काल्प में लग के है, इट इज नॉट गोइंग अप, है ना. जब कोम भी करता है तो स्काल्प से चिपके हुए रहते हैं. दिस शोज द हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन इन द चाइल्डहुड एंड मोस्टली द मैग्नीशियम इज द remedy we can think of. Magnesium group, not only the carb or magnesium like that. The thick, tough and stuck to the scalp,
if you get such a type of hair, then think of magnesium group, because this shows the, you can evaluate. Now, don't directly jump, but you can evaluate in such a patient, evaluate the history in the childhood, ki whether there is a history of parental control or emotional suppression, because sometimes this indication gives you a better case taking. It gives you to the clue, it gives you clue how to question or which part of the life you have to be evaluate from the patient. बिकॉज पहले क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब एमडी में था, एमएल धवले में बोलो या प्रैक्टिस शुरू किया, तो एमडी में जैसे फर्स्ट केस लिया मैंने, एमडी फर्स्ट ईयर, तो मुझे 2 घंटा लगा। नो डाउट कि वो मैंने पूरा किया, केस को समझा, और जिनको कंसल्टेशन था, जिनको मैंने प्रेजेंट किया, उन्होंने भी तारीफ की कि वाह अच्छा, मतलब 2 घंटे केस चला, क्योंकि वो तो फर्स्ट डे ऑफ पोस्टिंग था। कॉस्टिगम वाज द रेमेडी, आई नो, आई रिमेम्बर इट, बट I evaluate the each and every part of the life to understand the stress in that patient life. Try to understand this. But when I know such things, or when I know conflict, that the patient is suffering with this disease and his or her conflict is this, then my case taking was very concise. The time period now I required is not more than half an hour, might be a half an hour. If it is more pathological, highly pathological case, then the time period might be 40 minutes. Understanding the exact problem in the life, मतलब इसका प्रॉब्लम, अगर इसको ये बीमारी है, इसको पेनक्रेटाइटिस है, इसको आर्थराइटिस है, या इसको माइग्रेन है, तो विच पार्ट ऑफ द एरिया इज डिस्टर्ब मेंटली, मतलब वाइफ से प्रॉब्लम है कि बीवी से वाइफ से प्रॉब्लम है कि ब्रदर सिस्टर से प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स से है कि जॉब में है, दैट वी हैव टू, मतलब एग्जैक्टली वो पॉइंट पे हम टच करेंगे। दैट गिव्स यू द कंप्लीट हिस्ट्री, दैट गिव्स यू द कंप्लीट हिस्ट्री, राइट। सो बिकॉज अभी 2 दिन पहले एक केस था, इनफर्टिलिटी, आई थिंक इनफर्टिलिटी, सो देयर वाज अ इनसिक्योरिटी, या ये पूछना था इज देयर इज अ रिस्ट्रेन, है ना। तो जब हम जनरल क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि आपके फैमिली में है या आपके जॉब में है ना, तो राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड, इसमें भी ये हेल्पफुल होता है। राइट साइड राइट साइडेड डिसीज है, लेफ्ट साइडेड है, पर्सन का एफिनिटी, उससे भी हम उसको ये कर सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम डेवलप होगा, है कि नहीं, या कन्फ्लिक्ट अगर समझे तो, अगर आपको बीमारी पता है तो कन्फ्लिक्ट, तो वी कैन डायरेक्टली और वी कैन स्किलफुली आस्क द क्वेश्चन, सो दैट पेशेंट उस पर फोकस करेगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करेगा। तो घर में क्या था, शादी होने के बाद कैसे रहा, इन लॉस कैसे थे, मतलब फिर हस्बैंड था, उनके वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, बराबर है कि नहीं, तो वो सब पेशेंट ने एक्सप्लेन किया। और केस ज्यादा नहीं, 30 मिनट से चली, बट द केस वॉज कंप्लीट, राइट। So this shows, this type of understanding gives you the clue in which part of the life you have to dig, तुमको कहाँ पे पेशेंट का सेंसिटिव पॉइंट कहाँ है और कहाँ टच करना है और कहाँ से जानकारी हासिल करना है, राइट। सो रेज डिफिएंट हो गया, और थिक स्टक टू द स्काल्प, मैग्नीशियम ग्रुप। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ यू सी द कर्ली एंड वेवी हेयर, curly hair and wavy hair, these type of peoples are more passionate, more cheerful, fun loving individual, अगर curly hair है। This type of peoples are more passionate people, cheerful peoples, fun loving peoples रहते हैं, goal oriented इनका mindset रहता है, and mostly this you can see in the ophidia group, curly hair ophidia group। So ophidia group से कोई भी remedy आ सकता है, right? So please keep make a note of this. If you get the messy and untidy hair,
है ना, बराबर से कोम नहीं किया या कोम भी नहीं किया है, इधर उधर ऐसे बाल बराबर से नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, क्लीन नहीं है, मेसी है एकदम, this you get the picture of sulfur tarantula. When there is uncleanliness you get, right? You if you see the patient who is early balding, you get the male type of pattern of baldness or early balding and the thin hair, very thin hair. Then this shows the timid nature of the person and there is a lack of confidence, which is mostly seen in the Calcarea group, Cilicia, and the Baryta group. Baryta, Cilicia, tuberculinum, even the Calcarea. So timid and lack of confidence, right? The brittle hair, which is easily break, which is thick but easily break. This denotes the fear of poverty, and the remedies are the Kali Carb, Sorinum, and the fluoric acid. Fear of poverty, right? Another might be a fear of poverty. Calcarea में Calcarea flower. So brittle hair. Now you get the, if you see the physiognomy, अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे physiognomy में there are the three main types of the temperament. For example, you get the mental temperament or mental contour of the face, then vital, and then motive. Now we can correlate these facial features to the miasm and then ultimately to the type of remedies or the group of remedy. See, ये कितना interesting है कि facial contour कैसा है, उससे भी that person का underlying miasm हम उसको पता कर सकते हैं, बराबर है, and will roughly denote the few group of few remedies. कैसे करेंगे अभी देखेंगे हम. अभी फेस टाइप में तीन टाइप है, मेंटल है, वाइटल है एंड मोटिव है. अभी ये फर्स्ट जो होता है मेंटल, सी द फेस टाइप, सी हाउ शी लुकिंग, उसके आंख, फोरहेड, नोज, लिप्स, चीन, चीन इज स्टैपरिंग, पियर शेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पियर शेप, ऐसे पॉइंटेड है, नोज भी अच्छा है, मतलब अप्रोप्रिएट है. द नोज, लिप्स, आईज आर अप्रोप्रिएट टू द फेस. These type of persons are more sensitive, more intelligent, more creative, more artistic, and more conscientious. You can see such a person in the Ignatia phosphorus like that. Pear shape. If such a face you get, this is the called as the soric face. This is called soric face. राइट, सच ये जिनका फेस रहता है वो पेपर, जो पर्सन्स होते हैं मोर सेंसिटिव होते हैं, इंटेलिजेंट, कंसेंशियस, लाइक दैट. लाइक वाइटल फेस या वाइटल टेम्परामेंट. सी द गर्ल्स और दैट लेडी लुकिंग वेरी चबी, लुकिंग फैटी, ऐसा लग रहा है कि मोटी है, फैटी है और राउंडेड फेस है. इट इज नॉट पियर शेप ऐसा, it is a rounded face, round and chubby face with thick bushy hair. Now these are more money minded people, these are very greedy people, they are cheerful, even having the good quality like a good orator, which indicates the psychosis in their background, which indicate the psychosis in their background. And the most of the time if they are the good orator, they the remedies coming up is the opium and lachesis. Vital face, money minded, cheerful, precarious, right? The another third type is the motive type. See the face, this is the squarish type face, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा. That means this indicates the prominent, very prominent nose, prominent jaw. The bones line or bones edges are very prominent. This prominency or squarish face with the prominent cheek bones and the strong jaw
This is the syphilitic or psychosyphilitic in background. These peoples are very strong people, more courageous, more positive people, and having the leadership quality. And the remedies which indicate such a type of phase are the more of metal group, Calcarea, Baryta group, like that. So more of syphilitic. अभी आप पूछेंगे कि कल्किरिया कैसे के syphilitic, तो when I talking about the Calcarea, that doesn't mean it is the Calcarea carb. Again, if you see the picture like Calcarea and the pathology and the other features showing the syphilitic in character, then think of Calcarea iode, think of Calcarea ars, right? Not a Calcarea carb. Like that, the Baryta iode, Baryta Phos, like that, right? So these three facial contour denotes the certain personality, certain dispositional traits and features, and even the mism. The disproportionate face, the distorted रहता है ना, किसी के चेहरे को देख के कभी कभी ऐसा घिन आती है, distorted. This comes under the syphilitic because it produces the disgust in the other mind. So this type of face is the syphilitic in nature, right? नाउ द हाइट, अभी हाइट से कैसे करें समझेंगे कि ये कौन से टाइप का पर्सनालिटी है और कौन से रेमेडी आती है इन बुक, इन मट्रामेडी का टेक्स्ट बुक, ऑल दीज थिंग्स आर ये कि जैसे अगर हम कल्केरिया फॉस या फॉस्फोरस देखते हैं तो उसमें लिखा है लीन थीन एंड टॉल, लीन थीन एंड टॉल, है कि नहीं? कई लिखा है जैसे कल्केरिया काली कार्ब, और जैसे बराइटा में शॉर्ट स्टंटेड रहता है, और काली कार्ब का कैसे रहता है स्टॉकी बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, फर्म बिल्डअप बट शॉर्ट, स्टॉकी बिल्डअप इन काली कार्ब। ये बुक में मेंशन नहीं है बट आई दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, राइट? सो इफ यू गेट द टॉल पर्सन, then think of Calcarea phos, creosote, macphos, tuberculinum, phosphorus, like this remedy. And others. It is not restricted to this. These are the most important remedy. And if you get the height of the patient or person which is the stunted and dwarfish, then think of the Medorrhinum, Baryta group, Syphilinum, and Sulphur. Right? Most important here is the Medorrhinum and Baryta. If you get the muscle fiber very rigid, strong, and firm muscles, it is not relax ऐसे जैसे थूजा में या कलकिरिया में जैसे रिलैक्स मसल्स और फैट ज्यादा रहते हैं, है ना, रिलैक्स दिखते हैं, है ना, ऐसे ढीली ढीली मसल जो हम बोल सकते हैं वैसे नहीं, रिजिड फर्म। जैसे कोई जिम में जाता है तो उसके मस्कुलर कैसे रहते हैं ना, रिजिड और फर्म रहते हैं, तो लाइक दैट। तो बराइटास आर मोर ऑफ रिजिड मस्कुलर फाइबर टाइप का रहता है, बट कलकिरिया आर मोर ऑफ सॉफ्ट एंड रिलैक्स मसल फाइबर्स टाइप रहता है। तो मस्कुलर मस्कुलैरिटी जो हम बोलेंगे उस उससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी कोई पेशेंट ओबेज रहता है, अगेन द बिल्डअप, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, कोई शॉर्ट रहता है, कोई शॉर्ट लीन थिन रहता है, कोई शॉर्ट ओबेज रहता है, कोई ओबेज तो रहता है बट वेरी स्लो। मोस्टली हम एक माइंड में बना लेते हैं कि अगर ये मोटा है ओबेज है तो ये एकदम पैसिव स्लो थका हारा होगा, slow होगा। But I have seen the patients who are obese, but still they are very active. They are very active. They does work very actively. They are doing the things very actively. They are playing the sports very actively. मतलब जो लिंथिन वाला नहीं जितना एक्टिव रहेगा उतना है। That means the obese but active. The remedies are opium and mercury. डोंट थिंक ऑफ कल्किरिया, बिकॉज कल्किरिया कैसे रहेगा, ओबेस भी रहेगा और स्लो भी रहेगा। कल्किरिया कार्ब स्पेशली, कल्किरिया आयोड अगर देखेंगे तो रेस्टलेसनेस आ जाएगा। तो कल्किरिया कार्ब ओबेस भी है और स्लो भी है। दिस स्लोनेस, फास्टनेस, दिस स्पीड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये दूसरे पॉइंट अभी नेक्स्ट स्लाइड में
आएगा कि स्पीड ऑफ द पेशेंट, स्पीड ऑफ द रेमेडी, स्पीड ऑफ द डिसीज, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, डिसाइडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर शॉर्ट है और लीन थिन भी है तो कैल्केरिया, फॉस, सिकल कॉर, नाइट्रम और सल्फर, लाइक दिस। शॉर्ट है, ओबेज है तो बराटा, कार्ब एंड मेडोरिनम। शॉर्ट है एंड ओबेज है। ओबेजी है, स्लो है, कैल्केरिया, कैप्सिकम, ग्राफाइटिस, कार्बन ग्रुप इसमें ज्यादा आएगा, जो स्लोली एक्ट होता है या स्लो स्लो एक्टिविटी रहता है जिसका। इवन द फाइटोलैका एक्टिव में बताया मैंने। द अनदर पॉइंट विच इज आई एडेड इज द स्टॉकी, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग। शॉर्ट है, बिल्डअप शॉर्ट है, बोलेंगे कि छोटा है या कम हाइट है, बट स्ट्रॉन्ग एंड हेवी है, हेवी बिल्डअप है ना। हाइट वाइज इफ यू सी इट इज वेरी शॉर्ट बट स्ट्रॉन्ग एंड हेवी बिल्डअप। दिस इंडिकेट द काली, काली कार्ब, स्पेशली काली कार्ब। एक ऐसे ही, एक ऐसे थे कि मेरे सीनियर था थे इनिशियल प्रैक्टिस में 2012 13 14 के करीब है, जब मैं टाउन में प्रैक्टिस करता था और नागपुर में आता था, किसी सीनियर के कैबिन या चेम्बर में बैठता था, पेशेंट देखता था। तो उनके पास मेरा समय हो गया था और एक पेशेंट आया, वो शी लुक द एजेड अराउंड द 40 50, अराउंड द 50, एंड वेरी स्टॉकी बट स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, very stocky and strong buildup, and some anxiety while narrating on the face about the disease condition। मतलब मुझे जाना था क्योंकि मेरे ट्रेन का समय हो गया था। सर, सर तो केस लेना था, मैं निकल गया, पर मैंने पेशेंट को देख लिया, फेस देख लिया, बिल्डअप देख लिया, और जाते जाते सर को मैसेज किया कि प्लीज रूल आउट द काली कार्ब, प्लीज रूल आउट द काली कार्ब। सर ने मटरा मेडिका का बुक निकाला, काली काब निकाला, और जो उसमें था मटेरियल, मतलब जो इंडिकेशन, सर ने पूछना शुरू कर दिया कि अब ऐसा है क्या, वैसा है क्या, एंड एवरीथिंग इज यस में, मतलब एवरीथिंग इज लाइक अ काली कार, बराबर है। बट वही डोंट हैव टू प्रेजुडाइज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जैसे इनिशियल प्रैक्टिस में अगर हम प्रेजुडाइज हो गए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिस सीनियर बन जाएंगे, एक्सपीरियंस आएगा, है ना। अगर हमको वही मस्ट बी अ वाइड इनफ, ऐसे नहीं कि भाई ये शॉर्ट है या ओबेस है तो काली का भी होगा, कलकेरिया ही होगा। वी हैव टू बी वाइड इनफ टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, टू evaluate the whole totality, not only the one part of the body, है ना, right? So this is my personal experience, that's why I'm sharing you। another is the posture, मतलब patient person कैसे बैठा है। I think we must be engulf, और हमने ये एक आदत लगा देना चाहिए, वी मस्ट इन और माइंड में या कंटिन्यू, हमने इसको अपने नेचर में ढाल देना चाहिए कि हम जो भी देख रहे हैं उसको मैथमेटिका के हिसाब से देखें, या पोस्चर है ऐसा है वैसा है तो माइंड कैसा होगा, इसका डिस्पोजिशन कैसे होगा, इसकी पर्सनालिटी कैसे होगा। नॉट इन our chamber, but also when we are doing some other things, we are roaming in the market, we are doing the shopping, right? कि ओबेस है तो फेशियल एक्सप्रेशन देखो कैसा है, कंटूर कैसा है, कैसे चल रहा है, बैठा कैसे है, जैसे चेयर पे भी बैठा कैसा है, इवन दैट डिनोट सिटिंग पोस्चर, नी का पोजीशन क्या है, लेग्स ऊपर है नीचे है, क्रॉस एंकल है कि क्रॉस लेग है, फोर शेप बोलते हैं इसको, फोर शेप। दिस ऑल डिनोट द इंटरनल personality or traits, and this is scientific and proof. It is not only in the homeopathy that we are considering this is universal। if you see the body language book, this is also good clue for us, है ना। हमने बॉडी लैंग्वेज के भी बुक्स पढ़ना चाहिए, फिजियोग्नोमी के भी पढ़ना चाहिए, बराबर है कि नहीं। सो यू गेट द important information which is literally helpful in the practice। one of the author who is a very good practitioner, that is the Ajit Kulkarni sir। when I was in the BHM से MD में था तब उनका एक बॉडी लैंग्वेज का बुक है, काफी डिटेल में दिया हुआ है कि सीटिंग वेटिंग, उन्होंने रेमेडी से कंपेयर किया है,
कि phosphorus है तो कैसा रहेगा, कंटूर, फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल दिस. इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड यू कैन लुक एट दैट, you can see that book or refer that book. Now if the person is sitting erect but tilt towards the back, right, this I think you must आप सबको ये दिख रहा होगा. I think everyone is see the posture I am trying to express through my posture. So if the person is sitting erect with the slight tilt towards the back, right, this ऐसे है ना. कोई अगर ऐसे बैठ रहा है या ऐसे बैठ रहा है तो दिस मैटर, this denote the internal state of mind and the internal dispositional features. So sitting erect will tilt back towards the back, showing the haughty nature or haughtiness and diligence. This the remedy indicate is the platina. बराबर है. Remedy indicate is the platina. The sitting, sometimes this platina is very, in the platina most of the time the observation is enough. In the morning in my Wadi OPD, I have prescribed the one person, the lady was there who is severely constipated, obstinate constipation. मतलब 6 महीना पहले आई, 2-3 महीना मेडिसिन ली, है ना, फिर 6-7 महीने, मतलब कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ नहीं, तब भी इरेगुलर थी, अभी 6 महीना बाद आए, तो अगेन दैट कंप्लेंट is there which is aggravated since few days of having the severe constipation, and even the laxative tablet Dalcolax is not relieving that constipation. बट पेशेंट का जैसे सुबह फोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी दिखाना है, तकलीफ हो रही है, तो मैं बोला ठीक है आफ्टरनून में आइए धंतुली के ओपीडी में. नहीं डॉक्टर साहब मेरा 12 बजे मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना ही है, तो मुझे सुबह का ही सुबह का ही आप ये दे दीजिए, अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मुझे सुबह ही आना है, आप बोलिए कहाँ आना है ना. उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री नहीं रहूंगी, फिर 2 दिन तक मैं बाहर ही रहूंगी, है ना. तो आज आज बताइए ऐसा. So when the patient comes and then all the features, the way of dressing, the way of talk, that you will get the person showing the dictatorialship, person is showing the haughtiness, superiority, right? So you can relate with the, even you can relate to the pathology. You get the complete picture of the remedy, right? So sitting erect with tilt forward, I say. Sitting erect with tilt forward. This shows the patient is slightly anxious. So the anxious remedy, anxiety about the health might be if the patient sitting in front of you, anxiety about health. तो जो remedy होंगी, even arsenic आएगा, काली आएगा, तो argentum nitricum is the most important remedy. If the person or the patient sitting at the edge of the chair, एकदम edge पे, ऐसे complete chair पे नहीं बैठा है, edge of the chair, this is more anxious in nature. These are like a Calcarea की डॉक्टर क्या बताने वाले, डर, fear उनके इसमें रहता है, क्या बताएंगे क्या नहीं, क्या बीमारी हुई होंगी. So these are very anxious personality. The remedies which denote this type of posture is the Kali group, Calcarea's Phos, Calcarea, phosphorus or the sulphur. समटाइम्स द सल्फर, ये ऐसा फिक्स नहीं कि ये सल्फर में ऐसे ही बैठेगा. समटाइम्स द सल्फर शोइंग द कैजुअल एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ द फिजिशियन, बट विद द stoop shoulder becomes stoop, and one hand on the other chair with or without the leg maybe on the knee, right? 4 o'clock posture बोलते हो. So 4 o'clock postures का थोड़ा सा 4 leg postures is the dominating और थोड़ा dictatorialship denote करता है. That will not include even the very important, this is very important feature, the shape of the nose. बराबर है कि नहीं? शेप मतलब नोज का शेप कैसा है. इन वी कैन सी इन द मेंटल टेम्परामेंट, द शेप नोज एकदम शार्प नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प नहीं, शार्प है बट अप्रोप्रिएट टू द फेस था. दैट इज द स्टोरी. अगर साइकोसिस में देखेंगे तो लार्ज नोज रहेगा, राउंडेड नोज रहेगा. कभी कभी नोज ऐसा रहता है समझता ही नहीं बोन्स है कि नहीं करके. और सिफिलिस में दैट इज द मोटिव में क्या होता है,
मेंटल, वाइटल, मोटिव। मोटिव में एक्स्ट्रा शार्प रहे, है ना, बिग, एक्स्ट्रा शार्प। नाउ द नोज विच इज अ शार्प लाइक अ बिग, चोच, है ना, पोपट की चोच, बिग, शार्प लाइक अ बिग, वेयर द नेजल सेप्टम यू गेट क्लियरली विजुअलाइज. This shows the person is very censorious and very critical and very egoistic in nature. So the critical, censorious, egoistic कौन से रेमेडी मोस्टली आएंगे, ये मैंने मटेरिया मेडिका से निकाला है, तो प्लैटिना में भी, लाइकोपोडियम लैकेसिस, लाइक दैट. The nose of the person, the nose of the girls, lady, these decide the internal genetic expression. These decide the personality की वो कौन से टाइप की पर्सनालिटी. नाउ द शार्प लाइक बिग है बट इट टर्न्स इनवर्ड. आपने देखा होगा नोज तो है पर थोड़ा सा अंदर झुका हुआ है, इट इज नॉट पॉइंटेड आउटवर्ड. तो शार्प लाइक बिग बट बिग टर्न्स इनवर्ड. द पर्सन कीप ऑन साइनिंग, दीज आर मोर रेज फीलिंग इनसाइड, रेज, वेरी दुखी प्राणी, बराबर है कि नहीं, रेज फीलिंग इनसाइड. So these are mostly a nitric acid, Solinum staphysagra. Right? Now the some peoples you can observe having the rounded nose, rounded and blunt, not a sharp, not a pointed. Blunt nose or rounded nose. These are chubby, chubby जिसमें face रहता है. These are the looks like a, ऐसे feel आता है कि ये boneless nose है, bones ही नहीं है इसमें. So they are very soft-hearted people. They are very cautious people, but at the same time having the lack of confidence and indecisiveness, and even the obstinate person. So these are the like a Calcarea, like a pulsatilla. These are the remedy mostly you can think if you see such a type of shape of the nose, right? So built up हो गया, muscular fiber हो गया, height हो गया. देन आईज, वेदर आईज कैसे है, लार्ज प्रोमिनेंट है या स्मॉल आईज है. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड while interpreting such things you have to be rule out the morbid condition. You have to be rule out the morbid condition. नहीं, अभी मैं, जैसे हम बता रहे हैं कि लार्ज आईज, लार्ज एंड प्रोमिनेंट आई, एकदम कहीं कहीं हमको दिखता है कि आईबॉल जैसे प्रोट्रूड हो रहा है, बट दैट इज द डिसीज आई. So we have to evaluate or understand whether it is a disease expression or it is the constitutional expression. Because sometimes the body posture, है ना, ये कोई बीमारी के तरफ भी हमको इंडिकेट करता है. अगर प्रोट्रूडिंग प्रोमिनेंट आई है, so that means there might be a patient having the thyroid disease, thyrotoxicosis, Graves disease, like that. So don't take it blindly. Be alert while observing such a person. Even the small eye, which is small eye, छोटी छोटी आंख जिसको हम बोलेंगे, तो practical person. These are more of practical person, है ना. If the person is looking, जैसे हम बोलते हैं, ये वेरी जनरल नॉलेज भी है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि if the person looking straight and having the eye to eye contact. तो एनी पर्सन, हम देखते हैं ना कि कोई पर्सन आता है एकदम से धीमे से आता है, धीमे से बैठता है, मतलब अच्छा अडल्ट अडल्ट है, पर जब बात करता है तो नीचे देख रहा है, थोड़ा ऊपर देखता है फिर नीचे देखता है, मीन्स आई टू आई कांटेक्ट पुअर है, बराबर है नहीं. सो समटाइम्स द पेशेंट लुकिंग डाउन इटसेल्फ, दिस लुकिंग डाउन प्लस स्लो मूवमेंट, स्लो स्पीड, स्लो एक्शन, स्लो टॉक, and the facial expression shows sadness, nervousness. Now this could be the sign of depression. Don't take slowness as a characteristic feature or dispositional feature. Don't take slow talk as a characteristic phenotypic feature. Try to understand first disease, because if you are taking slow, if you are taking sadness, if you are taking slow speech or slow talk or
poor eye to eye contact, and if you are taking it as a just a timid person and you are prescribing the timid remedy, then it is totally wrong. That's why the importance on evaluating the disease condition and understanding the underlying pathology is very, very important. पर नाउअडेज अभी हमारी होम्योपैथी एडवांस होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए, तो ऐसा ऐसा होम्योपैथी अगर अपडेट हो रही मतलब इट बिकम मोर साइंटिफिक। तो हमको डिसीज पैथोलॉजी और मेडिसिन देने के बाद वो पैथोलॉजी कितना रिवर्स हुआ है साइंटिफिकली कब समझेंगे, जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वन पेशेंट इज देयर हु हैविंग द थायराइड ग्लैंड्स इनलार्ज, इरेगुलर पैटर्न में इनलार्ज थायराइड है, जो उसका जो एफएनएससी किया गया ये सब किया, दैट ऑल डिनोट्स द कार्सिनोम, है ना, वो सब की तो केस है। सो व्हेन आई प्रिस्क्राइबिंग द रेमेडी, देन वी हैव टू लुक एट जस्ट नॉट कि पेशेंट को कैसा लग रहा है। पेशेंट बोला डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज नॉट सफाइस कि ये मेडिसिन काम कर रही है या अभी पेशेंट ठीक हो गई। यू हैव टू इवेल्युएट द हार्मोनल पैरामीटर, you have to evaluate the size of the thyroid by sonography, by CT scan. सिर्फ मेंटली अच्छा लगना, if your remedy, if some after prescribing the remedy, just person or patient saying okay doctor I am feeling better, and you are not looking at the pathological condition or the investigation, then might be your remedy is superficially acting. Your remedy is superficially acting, and ultimately it causes the suppression and the gear of the disease shift to the higher disease. Try to understand this. That's why if you are prescribing the remedy on the superficial mental symptoms alone, that means your remedy is partially similimum. If you are only prescribing the remedy on the general or physical contour, then again it is not a correct 100%. If you are prescribing only pathology, if you are prescribing only the side affinity, if you are prescribing only the general symptoms, this gives the partial similimum. और जब हम पार्शियल सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक तो जो रिजल्ट आना है वो पार्शियल रहता है, या पेशेंट गोज इनटू द सप्रेशन एंड द डिसीज शिफ्ट इनटू द अदर डिसीज। मतलब ब्रोंकाइटिस होगा तो ब्रोंकियल अस्थमा होगा। वन ऑफ द केस दैट हैज प्रेजेंटेड एंड रिटन इन द book has written in the book that the 10 years girl, when the parents approached to the sir, the lungs collapse because of the severe pneumonia and patient is on the ventilator. Now when they take the history, the complaints start from before 1 week. Complaints start before 1 week with the cold, means cold coryza, then cough, and then it goes into the pneumonia, and then pneumonia, and then collapse, lung collapse. That means respiratory center is getting collapse, breathing difficulty, she is on the ventilator. So how the disease is progressed so fast, that means the remedy which was prescribed for the, whether it is allopathy or homeopathy, it doesn't work and it shift the disease to higher miasm and higher or more important organ, right? So our prescription must not be, our prescription must be a total. It denotes the totality, it denotes the whole person, not a single entity or the just a one entity which decide the remedy, right? So that's why always see if the person looking at the straight, that means having the good eye to eye contact, good eye to eye, it is not like a staring, good eye to eye contact, that means the patient is very truthful and new, very diligent, very sober and very truthful. क्योंकि जो सच नहीं बोलते हैं and they are the peoples who are lying,
They never keep their eyes steady and have the eye to eye contact. They might be look sideways while talking, looks here and there. So the when the person never look and having the no eye to eye contact or poor eye to eye contact, that means there are, that doesn't mean the patient only कि lie है या झूठ बोल रहा है. It also indicates the timid nature of the person and the lack of confidence. है ना, timid, lack of confidence, and might be the patient is lying or sly. Right? Is it clear? All these are the physical makeup. Try to understand. Mental makeup, physical makeup. Right? So हमने देखा इसमें क्या क्या देखा है, जैसे इसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ हेयर कैसे रहते हैं, फेस का टाइप कैसे रहता है ना. तीन फेस के टाइप, हाइट, देन मसल फाइबर, बिल्ट अप कैसे रहता है, पोस्चर कैसे रहता है, शेप ऑफ नोज कैसे रहता है, आईज के शेप से या कैसे समझे, एंड हाउ द पेशेंट इज लुकिंग टुवर्ड्स, है ना, उसके भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. राइट. अनदर इज द जनरल मेकअप ऑफ द पेशेंट. अभी जनरल मेकअप में क्या आता है, वो तो फिनोटाइपिक था, ये तो जनरल मेकअप में जनरल्स हु where the patient, we see the patient as a person, like a thirst, like a appetite, like a activity, speed, like that. The most important in the general makeup of the patient is the activity or the speed, or activity and speed, because the activity and speed, though it looks like a same, the it is the different. It is the different. मतलब the person who is active whole day, पर्सन बोल सकता है कि डॉक्टर साहब मैं होल डे में मेरा यहाँ गया था, वो क्लब में गया था, ये फाउंडेशन में गया था, ये प्रोग्राम अटेंड किया, दिन भर में एक्टिव था. बट इफ यू सी द स्पीड, की स्पीड कैसा है, नहीं नहीं मेरा सब काम स्लो होता है, मेरा स्लो चलता है काम, धीरे धीरे. काम तो सब लेडी काम दिन भर कर रही है, एक्टिव है, बट कैसे स्लो कर रही है, स्लो. तो एक्टिविटी एंड स्पीड इज द डिफरेंट एंटिटी, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट. When the patient comes in the acute condition, we don't ask the speed to that person. We see the activity of that person in the acute condition. Whether he is active, restless or dull, lying, शांत हो गया है, activity कम हो गई है, बढ़ गई है. This is important as far as the acute is concerned. And even in the chronic. But speed कैसे है? तो speed of the speed हम in general देखते हैं कि patient का speed कैसा है. और नेवर आस्क और नेवर रिलाय, दिस माय पर्सनल की बात, हम लेडी को जब पूछते हैं, लेडीज पेशेंट की स्पीड कैसा है काम का वगैरह सब ठीक है, हाँ बोल रही हाँ डॉक्टर साहब एकदम ठीक है, अच्छे से काम करते. पर जब हम हस्बैंड को पूछते हैं तो हस्बैंड, अरे डॉक्टर साहब बहुत स्लो काम है इसका, धीरे 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 थोड़ा काम करेंगी फिर बैठेंगी, फिर थोड़ी देर काम करेंगी, आलस आता है. सो यू कैन कोरिलेट विद द physical makeup, you can correlate with the way she walk, the talk, and she sitting in front of you. All these parameters are important. All these parameters are important while deciding. But कुछ बातें होती है while case taking. Remember, don't just rely on the patient information. Try to take or elicit the information from the accompanied person. मोस्टली जो क्लोज होता है वही साथ में आता है. तो हस्बैंड है तो वाइफ आएंगी, वाइफ है तो हस्बैंड आएंगे, है ना, बच्चे हैं या कोई पेरेंट्स होंगे, मदर आएंगे, फादर आएंगे. ट्राई टू सी, एक 5 मिनट या 2 मिनट बात कीजिए. दैट गिव्स यू अ गुड इंसाइट टू यू. समटाइम्स द टोटली केस ही चेंज हो जाता है. बराबर है ये. तो हस्बैंड कुछ बोलता है, वी हैव टू अगेन द क्रॉस चेक. बराबर है, ऐसे नहीं कि बस सिर्फ हस्बैंड ने बोला उस पर ही टोटलिटी निकाल.
You must be a sensible enough to understand कि ये exactly क्या मामला है, right? So why the speed is important or activity is important? Because activity is the primary, it is the primary, मतलब जब बच्चा शुरू बच्चा आता है ना, बर्थ होता है ना, बच्चा होता है तो हम कैसे बोलते हैं, डॉक्टर क्या देखते हैं कि if is he or she is crying, that means crying is also activity, and moving the hand legs all showing the activity, that means हाँ बच्चा अच्छा है। अगर वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सुस्ता है, दैट मीन्स देयर इज अ फुल डाउट अभी क्या होने वाला है और कैसा है स्टेट बच्चे का, whether it is living or non living, not die. So activity reflects the primary conditions of the life. So act is the primary reflection of the life or the living being. So anything in the world who does not anything in the world which does not change at all is, we called it as a dead or death. So the speed and the type of action is very important to understand the personality or to understand the genetic expression of that person, right? क्योंकि हर एक का अपना अपना स्पीड रहता है। कोई दिन भर भी काम करे, है ना, काम कर रहा है, पर उसका अगर आउटपुट देखेंगे तो इतना ही रहेगा। पर अगर कोई है 4 घंटा ही काम कर रहा है, 2 घंटा ही काम कर रहा है, पर इससे ज्यादा आउटपुट पाएंगे, right? In the same manner, I want to share one case. In the same manner, you have to assess the speed of the remedy also in acute and chronic both. ये जो केस बताया था इसमें यही देखना है, जो बच्ची का केस बताया कि हाउ द डिसीज स्प्रेड सो फास्ट and destruction occurs so fast, that means the remedy required is the syphilitic remedy, but who having the fast speed, स्लो स्पीड वाली रेमेडी नहीं है। माइट बी सम रेमेडी इज द डिस्ट्रक्टिव है, सिफिलिटिक है, पर उसका जो पेस है या उसका जो स्पीड है पैथोलॉजी बढ़ने का, वो माइट बी स्लो रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक केस था एक्यूट, दैट लेडी having the high grade fever, body ache, intense headache, doesn't want to doesn't want to even move, doesn't want to even the open the eyes, and the reason might be the exposure to hot weather or hot heat, है ना। सब सिम्टम इंटेंस थे, सब सिम्टम मतलब काफी इंटेंस में थे, और पेशेंट वांट्स टू लाई डाउन, डोंट वांट टू टॉक, है ना, ड्राइनेस यू आई गेट, सो आई प्रिस्क्राइब द ब्रायनिया, ब्रायनिया 1 ml इवन इन द फ्रीक्वेंट डोज। और जब हम मेडिसिन देते हैं एक्यूट में, see the if your remedy is right, it will gives you the instant improvement. पेशेंट आधे घंटे में भी देखेंगे, 15 मिनट में आप देखेंगे, पेशेंट से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसको 1-2 डोज दिए क्लिनिक में, उतना इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, पेशेंट को घर भेज दिया, बोला कि और डोज लीजिए और 2 घंटे में मुझे बताइए, 2 से 3 घंटे, 2 घंटे में। तो 2 घंटे में जब लड़के ने कॉल किया तो बोला कि वैसे ही, पेशेंट से भी बात किया, डॉक्टर साहब वैसे ही है, दो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक। तो जब मैंने इवेल्युएट किया केस को फिर से, तो देखा कि सिम्टम्स एकदम सडन है और एकदम एब्रप्ट आए हैं, और सब एक साथ, बुखार भी, सर दर्द भी, इंटेंस। सो व्हेन according evaluate the again reevaluate the totality and prescribe the belladonna, when I prescribe the belladonna that patient, और फिर 1 घंटे बाद फोन करने लगा है, तो पेशेंट फील्स बेटर, डॉक्टर साहब आता चांगलं वाटतंय, बरं वाटतंय, या कमी झालाय त्रास। But is though the brahania covering that totality, no matter totality cover कर रही है,
But if you see, the bryonia speed is very slow, insidious. The symptoms in the bryonia develop slowly one by one. मतलब ठंडा या खट्टा या कुछ खाया होगा तो सिम्टम पहले आएगा, मलेज, फिर आएगा बॉडी पेन, फिर हेडेक, फिर थ्रोट पेन, लाइक लोकलाइजिंग थोड़ा सा लेट होता है. बट यहाँ पे बेलाडोना में एकदम एब्रप्ट स्टॉर्म जैसे सब सिम्टम और इंटेंस. So that time I have not considered the speed of the symptoms, disease and the that remedy. तो हमको डिसीज का स्पीड और रेमेडी का स्पीड दोनों को मैच करना रहता है. बराबर है क्या? So if the speed or the activity is slow, that indicates the remedies like Barytas, Calcareas, Helleborus, Gelsemium, carbon group. Carbon groups are very slow. And the fast, alert, fast speed and having the good activity, that is the lachesis, Naxomica, arsenic, mersol, like that. Right? So must ये दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे एक्टिविटी और स्पीड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देन अगेन द इंपॉर्टेंट इज द साइड अफेक्शन, है ना. स्पीड और एक्टिविटी के बाद साइड अफेक्शन, वेदर द रेमेडीज नॉट रेमेडी पर्सन हैविंग राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड. ये हम कैसे पूछते हैं कि कोई भी एफिनिटी, कोई भी डिसीज, कुछ भी हो, कौन हो, मोल्स हो, है ना, शोल्डर पेन हो, हेडेक हो, कि कहाँ पे हो रहा है, कौन सी साइड ज्यादा एफिनिटी है. और एफिनिटी ऐसे नहीं कि एक ही बार एक ही समय पे एक ही सिर्फ हो रहा है कि सिर्फ एक साइड में हो रहा है. इट रिक्वायर्स मल्टीपल, मतलब दो या तीन से ज्यादा अगर वो एरिया, पार्ट और टिश्यू इन्वॉल्व है, देन वी कैन टेक इट एज अ लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड. नाउ इफ यू सी द केंट के अगर लिटरेचर पढ़ेंगे, बोगर के और बोनिंग हुसैन के, यू सी दैट दे गिव द लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस to the side affinity or the side affection, right? But nowadays people's or practitioner don't give the so much important to the side affection or side affinity ki this is the right side or left side, right? But it is very important because the side affection is the genetic expression. If the person having right sided, whether the disease comes at one side, that is we can call as a weak part or weakened organ, and this is the constitutional features or this is the genetic expression. This is not useless, this is a very important, and this is a genetic expression. And when we use this side affinity or side affection in case taking or while prescription, it is a very valuable tool in enhance the technique of case taking and also improve the prescription. अभी ये केस टेकिंग को कैसे इनहांस करता है? एनीवन कैन टेल मी हाउ द साइड एफिनिटी हेल्पफुल इन केस टेकिंग? If you want, anyone want, the peoples want break? Is it 1 hour is complete? If you want break, so we can give the 2 minutes or 5 minute break so that we get refresh. How the side affection is important in case taking. If you know the Hammer's theory, Hammer's conflict theory, if the patient having the disease over the right side or left side, if there is a right side of the body is involved or whether it is the left side of the body, for example, if the
person or the lady girls having the affection at the right breast or affection at the left breast, whether it is a carcinoma, whether it's any tumor, we can evaluate hmm, metaphorically and GNM, German New Medicine, है ना? That's I am talking. Very important. The right side of the body indicate the father, most the dominating person, the head person in the family. Maybe husband, partner, boss, lover, cousin, business, and friend. If the right side is affected. And if the left side is affected, that means the home, ghar, really problem related in the home, related to mother, related to issue, that means child, sibling, and pet. That means left side of the body denote the circumstances or the unhappy circumstances or the life situation related to mother, children, pet, home, like that. मतलब अगर लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो ब्रेस्ट क्या इंडिकेट करता है? नर्चरिंग, न्यूट्रिशन. वो क्या देता है ब्रेस्ट? What it indicates, it gives the nutrition to the child. So if it is the left side, the problem with the child you have to evaluate. Might be there is a lot of cares worries related to the child, right? Or might be the nutrition he wants to give to the child is not sufficient or not inadequate. Now this side affection gives the clue that how to evaluate the case and how to come conclusion कि conflict कहाँ है. मतलब ये conflict identify करने में बहुत आसान होता है. And that's why I'm talking in the initial hours of this session कि इससे case taking एकदम concise और precise हो जाती. This gives this save our time. जो हम पूछते हैं कि अनरिलेटेड ये भी क्या है वो भी क्या है, जिससे पेशेंट भी थक जाता है और समय भी ज्यादा बर्बाद होता है. तो दिस GNM, learning GNM is the site. Those people who don't know, go to that site. They have the biological conflict of each and every disease and the organ, tissue and system. डिसीज भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा. पेनक्रियास है तो अलग है, लंग्स है तो अलग है, गॉल ब्लैडर है तो अलग है, ओवरी है तो अलग है, राइट? तो साइड अफेक्शन अभी राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? नाउ द राइट साइड पीपल्स आर गवर्न्ड बाय द लेफ्ट ब्रेन, है ना? क्रिस क्रॉस कनेक्शन है. एंड द लेफ्ट साइड पीपल्स आर गवर्न्ड बाय द राइट ब्रेन. तो राइट ब्रेन डोमिनेंस की पर्सनैलिटी, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस की पर्सनैलिटी, वो भी हम समझ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस मतलब राइट साइडेड पीपल. लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस मतलब कैसे पर्सन रहेंगे लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस वाले, है ना? These peoples are generally a very strong dominating people, very angry people, but at the same time very achiever, ambitious रहते हैं, लाइफ में अचीव करते हैं और अचीव करने के लिए काफी मेहनत करते हैं. दे आर वेरी पॉजिटिव, having very positive outlook towards the life, very industrious, very logical, and having the good command over the other people or even on the language. But these peoples are very money minded, calculative, right? So these are the peoples which is the left brain dominance, having such a type of personality. This indicate through the right sided remedy or right sided people. जो राइट साइड एफिनिटी है या राइट साइड जो रेमेडी है, अभी ये कौन सी है जो ये पर्सनालिटी भी डिनोट करते हैं? लाइक लाइकोपोडियम, like metals like alumina, argentum metallicum, aurum palladium, stannum, like this. Now the more positive remedies. अब ये positive remedy मतलब कैसे? Because will हमने देखा है ना, will, positive will, negative will. तो ये most important है positivity. If the person's having the illness which is very dangerous and may leads to the death and the outcome very इसका bad होगा, मतलब सब घबरा जाते हैं, पर स्टिल डॉक्टर ने बोला है कि कुछ गुंजाइश नहीं है, बट टिल द पर्सन कि नहीं सब ठीक हो सकता है.
मैं मतलब मैं इससे बाहर आ सकता हूँ. द person is positive about his state, about his illness. This is very peculiar and characteristic. This is peculiar and characteristic, very uncommon. That's why even if the cancerous cases, even if in the syphilitic cases, take this positiveness, positive will at the top of the repertorization, because this indicate the even the syphilitic. सी पॉजिटिव होना, पॉजिटिव ट्रेड्स मतलब बोलते हैं ना कि ये काफी पॉजिटिव है ऐसे लाइफ के प्रति इन जनरल इज डिफरेंट, इज द सोरिक इन नेचर. बट इन दैट कंडीशन, क्योंकि माइजम चेंज होता है डिसीज टू डिसीज, स्टेट टू स्टेट, बराबर है. यू नो, हम डायबिटीज भी एक डिसीज को देखते हैं. दैट डजंट मीन्स डायबिटीज इज सिफिलिटिक इन नेचर. Diabetes can be soric, can be psychotic, or can be syphilitic. Depends on the underlying pathology. वैसे ही ये है पॉजिटिवनेस, बराबर. सो कब इसको कैसे लेना है, दैट वी हैव टू डिसाइड. द मनी माइंडेड रेमेडीज लाइक कलकेरिया फ्लोर, सल्फर, लाइकोपोडियम, these all the right sided mostly. सल्फर राइट साइडेड नहीं है, बट ऑल दीज आर द लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस रेमेडी है. इसमें ये फीचर जो है इंडस्ट्रियस, पॉजिटिव, ये फीचर्स, अचीवर्स, ऑल दिस फीचर्स आर देयर. अभी राइट ब्रेन डोमिनेंस मतलब लेफ्ट साइडेड पीपल, इनकी क्वालिटी कैसे रहती है राइट ब्रेन डोमिनेंस की, जिनका राइट ब्रेन का डोमिनेंस मतलब एक्टिव रहता है. दिस पीपल्स आर वेरी माइल्ड, बट वेरी माइल्ड एंड टिमिड. राइट ब्रेन डोमिनेंस वाले very mild, timid, but at the same time very sensitive, creative, artistic, philosophical, spiritual, and even the hysterical type. They have the lot of illusion and delusion in their personality. This we can see such a personality in our left-sided drugs or left-sided people who could be oversensitive. They could be a oversensitive metal like cuprum, ferrum, platina. Or hysterical remedy, you already know. Sensitive people, hysterical people, like this. So right brain dominance, left brain dominance, this need to be calculate and understand. है ना? Another activity speed important है, side affection important है. Another entity which gives the genetic expression comes under the physical general makeup is the thermal and thirst. Most people doesn't give importance to the thermal because thermal warmness decide the internal metabolism. Metabolism किसका कैसे रहता है, it depends on कि metabolic activity कैसे होती है, तो उसमें warmth ज्यादा generate होता है कि कम generate होता है, whether it is a chilly or hot. Again, it is very important to how to evaluate the thermality of the person, because most of the time we consider, हम पूछते हैं कि वुलन कैसे लेते हो, फैन कैसे रहता है, फैन शुरू रहता है कि बंद रहता है ना, स्पीड कैसे रहता है ना, कंबल लेते हो कि नहीं लेते हो. ऑल दीज थिंग्स आर important, but this may mislead, हमको mislead कर सकते हैं. So first important is what is the thermal. What is the thermal? Thermal decide the whether the your tolerance towards the heat or cold, or you can say tolerance on or intolerance towards the heat and cold. That decide the thermality, and not कि बा आप कंबल लेते हो कि नहीं. That all the parameters are important while interpreting the thermals. कि वेदर चेंज में होता है, गर्मी में क्या कवरिंग लेते हैं, ठंडी में क्या कवरिंग लेते हैं. वन ऑफ द जो internship वाली one of the internship girl comes to me with the case. It's a lot back this incident happened. Case लेके आई when I was working in the college, in the OPD of the college. तो सर ये हॉट है, मतलब थर्मेलिटी हॉट है, बराबर है. तो जब मैंने इवेल्युएट किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लगा क्यों हॉट है, क्योंकि ये कंबल लेती है, कंबल लेती है ना.
सॉरी, वो चिली है क्योंकि ये कंबल लेते हैं, चिली, बिकॉज दे वांट द हीट, दैट्स व्हाई शी टेक द कंबल। अभी मैंने पूछा ये कंबल क्यों लेते हो, मतलब कंबल क्या ठंडी लगती है इतनी, क्योंकि फैन भी आपको चाहिए होता है, फैन फैन चाहिए, आप कंबल भी ले रहे हो, तो आप कंबल क्यों ले रहे हो, बराबर है। सो सर कंबल, जब कंबल जब नहीं लिया तो मुझे नींद नहीं आती, and I feel very very good when I take this कंबल। वो मेरा एक ही कंबल है जो 10 साल से मैं उसको यूज कर रही हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करती, और हमेशा ठंडी रहो गर्मी रहो कैसे भी वेदर रहो, मुझे वो कंबल चाहिए, बिकॉज आई फील वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ दैट कंबल। So this is the state, mental state. If you see the kambal or that covering is not because of the hotness or coldness, it's because of that psychological state कि मुझे वो कंबल में अच्छा लगता है, not because to get the physical warmth but mental warmth। that doesn't decide कि ये पेशेंट बात चिली है करके क्योंकि कंबल लेती है like that। अगर कोई बोलता है कि फैनिंग द सेम, कोई बोलता है फैन फैन चाहिए, बट द रीजन बिहाइंड इट दैट वी हैव टू इवेल्युएट, है ना। तो ये थोड़ा सा थर्मेलिटी में हमको समझना है, क्योंकि थर्मेलिटी भी हम इससे रेमेडीज को रूल आउट करते हैं, थर्मेलिटी क्रोनिक डिसीज में, इवन इन द एक्यूट डिसीज। तो thermality is important, even the thirst is important because different constitution need a different having the different thirst। कोई ऐसे सिप्स में चाहिए, किसी को लार्ज क्वांटिटी, किसी को चाहिए नहीं, इवन इन द एक्यूट एंड इवन इन द क्रोनिक। so the dryness, again important, whether he actually or he or she actually feel thirsty, or he or she does just taking or taken the lot of water, ample of water, because someone told, someone advised him or her that taking or drinking the ample amount of water is very good for health. Even if you see, there was a history of renal stone where the doctor advised them to take the lot of water, and from that time this habit, the drinking water becomes habitual। तो हम सिर्फ ये पूछते हैं पानी कैसे है, पानी के बारे में, तो पानी बहुत लगता है, मैं बहुत पीती हूँ पानी या बहुत पीता हूँ पानी। This answer is not suffice because this is very misleading। When you ask कि whether you actually feel thirsty, पानी पीने अंदर से इच्छा, थर्स्टी या ड्राई फील होता है कि नहीं, मुझे ऐसा तो लगता ही नहीं कि पानी पीना चाहिए, मैं तो जबरदस्ती पी लेती हूँ क्योंकि वो पानी डॉक्टर ने बोला था इसलिए। That we have to differentiate, very important। This is very, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, but it is very important to understand or to select the remedy, whether it is acute or chronic, right। अभी जो बच्ची आई थी, जो केस देखा मैंने, अभी प्यास लगती है क्या, हाँ प्यास लगती है, मतलब रात में उठ के पानी पर कितना पीती है, सिप जस्ट मुंह को लगाती है, सिप्स लेती है और छोड़ देती है, पानी पानी बोलती है, पर फ्रिक्वेंटली, पर सिप्स लगाती है और छोड़ देती है, सिप्स लेती है और छोड़ देती है। एट द सेम टाइम द अनदर features which is very important in case taking is the appetite, है ना। appetite कैसा है, खाना खाते हो, भूख लगती है, whether the constitution eat well but do not put on weight, whether some constitution having the ravenous appetite, insatiable appetite, बराबर है। that's why the appetite is important। so you get the symptoms like there is a emaciation of the person, emaciation of the body, though there is a good appetite or increased appetite। खाना बहुत खा रही है पर emaciation। Again, rule out the morbidity or disease condition। पर अगर वो constitutional feature है, खाना नॉर्मल चल रहा है फिर भी emaciation है, फिर भी lean thin body है, so take it as a characteristic feature। appetite एकदम ravenous है, मतलब खाना खाया फिर भी थोड़ी देर बाद भूख लग रही है,
insatiable है, hunger can't tolerate मतलब hunger tolerate नहीं हो रहा है. This is very important feature in considering and differentiating the remedy. Sleep pattern कैसा है, position कैसा है is important. Dreams, if it is frequently and cause the impact on the psychology or mind, that dreams is again important to consider, that gives the impact. Also the dream shows the subconscious process, there is a meaning in the life, we can correlate that dreams to the life space, life understanding of the life or personality. So the some dreams are important. Why even sometimes the dreams are important evaluating the disease, or the whether the disease is improve or not, whether the patient is improve or not. Dreams, that means if the patient having the destructive dreams, फ्लड आ रहा है, मर्डर हो रहा है, डेड बॉडी दिख रही है, डिस्ट्रक्टिव ड्रीम्स, जल रहा है, and after prescribing the remedy with the proper improvement in the other symptoms, if the dreams are changing from syphilitic destructive dreams to the psychotic dreams, बराबर है कि नहीं, एक मनी दिख रहा है ना, पैसे दिख रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव ड्रीम से अगर साइकोटिक ड्रीम्स है आ रहा है अभी, तो इट अगेन indicates the patient or remedy is right and patient is improved. This again the criteria for the to see the improvement in the follow-up, right? That's why it is important. Sleep pattern, the dreams, even the discharges, wound है, discharge है, कैसे sticky है, non sticky है, adhesive है, ropey है, stringy है, right? So this is the important parameters to understand. Another is the पहला क्या था, mental makeup, then there is a physical makeup, then general makeup, and third is the disease makeup, that means myself, psoriasis, psychosis, syphilis. This is very, इसमें ये बहुत डेप्थ में है. Sometimes the sensitivity of the patient किसमें sensitive है, sensitivity of patient is again important, physical sensitivity and the mental sensitivity. Defense mechanism जो disease process है वो है myism. Why this is very important? Because when the person is under the attack or any injured organism cause injury to the cell or tissue, the tissue or the body react, है ना. कोई अगर अटैक करता है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या पैरासाइट हो, तो सेल क्या रिएक्ट करता है. इन व्हाट वे द सेल रिएक्ट, they get inflamed, there is a hypersensitivity or there is a irritation. Now inflammation is nothing but the reaction from the cell to eliminate the foreign body, bacteria, virus or the parasite. ये defensive mechanism, and this is scientifically proved, and this is mentioned in the Robbins pathology, that inflammation is nothing but the defensive protective process by the tissue or cell or system or the organism. If the cell or the tissue is behaving like this or reacting in a inflammatory like a inflammation से react कर रही है, that means the whole body is reacting like that. So whatever the thing that applicable to cell or tissue is applicable to whole organism. मतलब अगर वो inflammation हो रहा है in order to eliminate the foreign material or protect, in order to protect the whole body or tissue or cell, है ना. अभी ये inflammation होने के बावजूद भी अगर that organism is not eliminating or eradicating or destroyed, then the person or the genes or the defenses has to change their gear. Gear मतलब psoriasis to psychosis. Then they have to fortify, they may be proliferate, they may form the induration in order to protect the organism from the foreign organism. That means bacteria, virus, all. So there is a second mechanism is the psychosis, induration, proliferation, है ना, like this. If इससे भी अगर काम नहीं होता है तो aphorism 74, body has to destroy his
small part or single part in order to save the whole body. Body has to destroy, मतलब syphilis में चले जाएगा. This syphilis defense against is the nothing but the is the expression, is the constitutional expression. That's why whether the person or disease in the psora, psychosis, syphilis, very important to understand. Because जो फोर्स हम उस पे स्टिमुलेशन जो हम देंगे in the form of remedy, that must cover that miasm. अभी miasm मतलब कैसे? तो if the body is having the syphilitic disease or defense, है ना, syphilitic disease मतलब syphilitic defense शो कर रही है body. The remedy which is not a syphilitic like that और psychotic है तो psychotic remedy. ये पहले कंसेप्ट था, या पहले जो मैं एमडी भी कर रहा था तो कि बस साइकोटिक डिसीज है तो चलो थूजा दे दो, नाइट्रम सल्फ दे दो, कलकेरिया दे दो. दिस इज वेरी रॉन्ग एंटिटी और कंसिडरेशन कि ये मर्क्सॉल है तो सिफिलिटिक ही है, बेलाडोना है तो सोरी की है. Try to understand the triamismatic remedy or triamismatic understanding of the each and every remedy. If you are looking at the lycopodium may be having the soric state, psychotic state, syphilitic state. Sepia, if you are considering the sepia, there is a soric sepia, there is a psychotic sepia, there is a syphilitic sepia. We will take one of the remedy to explain the triamismatic understanding of remedy. बराबर है. So when we have to prescribe, give stimulation to the syphilitic defense, we have to consider the syphilitic rubric or syphilitic symptoms in order to eradicate that syphilis. Or in order to eradicate the psychosis, we need to look or evaluate the symptoms which is the psychosyphilitic or syphilitic in nature. मतलब अगर कम ये अगर स्ट्रांग है, कोई अगर चक्कू है किसी के पास, तो आपके पास अगर लकड़ी है या कोई वुडन कोई डिफेंसिव ये है ना, लकड़ी है ऐसे, बम्बू है, लकड़ी है ऐसे जिससे आप मार सकते हैं, और किसी के पास तलवार है, तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस कौन सा होगा? तो लकड़ी वाला नहीं जीतेगा ना, तलवार वाला एक हिस्से. पर किसी के पास तलवार है और किसी के पास गन है, डिफेंस गन हायर, तो तलवारबाजी में कितना भी वो माहिर हो, पर या बॉडी बिल्डर भी हो, तलवार है उसके पास, पर ये जो जिसके पास गन है वो लीन थी ना एकदम, उतनी ताकत नहीं है उसके पास, फिर भी उसके पास गन है. डिफेंस जो है वो मोर डिस्ट्रक्टिव है, एक एक कुछ सेकंड में ही वो बॉडी बिल्डर को खत्म कर देगा. सो व्हेन वी हैव द डिफेंस, बॉडी डिफेंस, psora, psychosis, accordingly we have to evaluate the symptoms and we have to select the rubric or symptoms, whether it is a mental, physical, general, and select the remedy. Not directly to the कि भाई ये psychotic है तो psychotic remedy, syphilitic है तो. No one remedy is having the one miasm alone. Every remedy having the three miasm. Even the belladonna is not soric. Belladonna का soric अलग है, lively, sensitive, and syphilitic belladonna mania, wild. So all the remedy having these shades. So we have to consider accordingly. That's why the miasm, understanding the miasm is very important. हम एक ही अप्रोच हर रेमेडी को या सॉरी हर डिसीज में लगाएंगे तो हमको रिजल्ट नहीं आएगा. बराबर. सो द ऑब्जर्वेशन पार्ट भी मैंने बताया था, और ये भी सब ऑब्जर्वेशन ही है कि कैसे जब पेशेंट बोलता है तो कैसे एब्रप्टली, हरीडली, हास्टिली, स्लो है टॉक, है ना, हास्टी है टॉक, तो उससे भी हम रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वी नीड अ रेमेडी विच इज वेरी हास्टी, विच इज वेरी हरीड इन नेचर, है ना, लाइक दैट. so we are covering this, the general makeup, physical makeup, the observation में देखेंगे कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन, मेंटल ऑब्जर्वेशन, राइट, शार्प बोन लाइन, बिल्ड कैसा है, क्या है, ऑलरेडी वी हैव टेकन. So this is very important. You can apply in the psychiatric cases itself. जब हम psychiatric केस आता है बिल्डअप, तो हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अरे कैसा है, उसके हेयर्स कैसे है, ठीक ठाक से है कि नहीं, बात कैसे कर रहा है, इमोशन कैसे है, टॉक कैसे है, थॉट कैसे है,
that we will in the नेक्स्ट सेशन कि एक्चुअल साइकेट्री में साइकेट्रिक केसेस में हमको क्या देखना है, राइट? एक्चुअल साइकेट्रिक केसेस में हमको क्या देखना है, वी हैव टू सी, है ना, कि साइकेट्री में भी कैसे, बट all this feature, all this information, all this the whatever we are learn is applicable in that cases also. So be prepared about it, take the advantage of it कि ये हमने केस टेकिंग एक एडवांस में ले ली, बिकॉज ये मेरे सेशन का पार्ट शायद नहीं था, वो समय पे मैंने डिसाइड किया कि इफ वी आर टेकिंग डीलिंग विद द केस, दो इट इज अ साइकेट्रिक केस, बट वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द नॉर्मल और रेगुलर, मतलब केस टेकिंग विच इज अप्लीकेबल फॉर ऑल, right? So we will take in the next session the case taking which is the applicable in the psychiatry. Now when we see ये cross sectional और ये नहीं है, when we take the case, we have studied the especially the chronic case, we have studied the case in two way. Again important is when we receive any case, what we have to evaluate, there are the three very important point to evaluate. अगर मेरा कोई आप पुराना केस देखेंगे जैसे माइग्रेन का केस, उसमें जब एनालिसिस होता है केस का, तो उसमें हमको क्या एनालिसिस करना है, we have to first three important points, we have to listen carefully, we have to first evaluate the disease in person, पहला disease in person, then we have to evaluate the person in disease, and then we have to evaluate the third point, the patient as a person. All these three point is very very important. मतलब disease in person मतलब we have to understand the disease, बीमारी क्या है, उसके बाद उसके बिना आगे नहीं जाना है. Then we have to understand the person in disease, मतलब वो बीमारी में पर्सन कैसा है, बीमारी में पर्सन का स्टेट कैसा है. So when we evaluate the mental state in the disease or since the disease started, ये स्टेट हो गया, मेंटल स्टेट हो गया. इफ द पेशेंट इज इन द ग्रीफ, इफ द पेशेंट इज इन द सैडनेस और व्हाट एवर द इमोशंस, और ये है सुसाइडल थॉट है, तो ये स्टेट है. ग्रीफ इज नॉट अ डिस्पोजिशनल फीचर. सो व्हाट वी आर taking consideration or evaluating is the cross sectional study of his life. Taking the mental statements, cross sectional study of the life. And when we evaluate the patient as a person, that means we are taking the history since the childhood. कि childhood में कैसा था, अभी adolescence में, फिर adult में कैसा. That means we are see the all epochs of that patient life since the beginning. See cross sectional study से patient अभी कैसा है. फॉर एग्जाम्पल 12th में बॉटनी या बायोलॉजी के लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम स्टेम को स्लाइस करके माइक्रोस्कोप में देखते थे. Are you remember this? अभी जब स्टेम को स्लाइस करके माइक्रोस्कोप में देखते थे, तो स्लाइस जो है उतना स्टेम बारीक एकदम, तो उसका मार्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन सब हमको उतना ही समझता था. हमको वो स्टेम कैसे इवॉल्व हुई है ओवर अ टाइम पीरियड, ये समझेगा क्या. जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी बार बार करेंगे फ्रॉम द रूट टू एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, हम अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी कटिंग बार बार करके वो देखेंगे तो हम उसका इवोल्यूशन पता कर पाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी ऑफ द केस. सो वी हैव टू study the each and every case as far as the chronic case is concerned in two way, cross sectional study and longitudinal study. Both are important in the totality, right? So it's a clear what is the cross sectional, what is the longitudinal study. Unsatiable, it is not unsatiable, it is the insatiable. Satiety means what? Satiety means the sense of satisfaction is not there. मतलब सटाइटी नहीं हो रही, खा रहा है खा रहा है खा रहा है, बट पेट ही नहीं भर रहा. बुलिमिया, देयर इज वन रूब्रिक फॉर, आई थिंक द बुलिमिया इज देयर. तो यहाँ पे सटाइटी नहीं हो रहा. रावेनस मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जानवर का पेट है क्या, कितना खा रहा है, बराबर है कि रावेनस इज द जैसे क्वांटिटी, इट डिनोट्स द क्वांटिटी एंड इट डिनोट्स द सेंस ऑफ सटाइटी, बराबर. सो इट हैज अ स्लाइट डिफरेंस यू गेट. So I think this cross sectional and longitudinal, the point is clear.
in acute we have doing the cross sectional study of the person. मतलब cross sectional मतलब उस acute में जैसे 10 साल से तकलीफ, सॉरी 10 दिन से तकलीफ है तो 10 दिन में पेशेंट कैसा है, तो हम मेंटल स्टेट को कंसीडर करते हैं. बट इन क्रोनिक we are considering the mental state as well as the dispositional quality, sensitivity, all these things. जैसे ये पूरा हमने जो केस टेकिंग लिया है, all these things, right? So I think this is the useful, and definitely this will helpful in our practice. We will meet in the next session, no, next Friday. Right? Thank you very much.